Okay, students, now we will go to the activities part. आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी इसमें जल्दी जल्दी करा दूँगा। बड़ी सिंपल सिंपल से हैं। फिर आप लोगों को जब भी ज़रूरत हुआ करे आप इसको दोबारा से इस मूवी को देख इसके वीडियो को देख के आप सारी ये हल कर सका करेंगे। ठीक है जी। तो एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि हमें बताया जा रहा है कि द की बिलो डिस्क्राइब्स द स्किल्स practiced in each activity: spelling and writing, reading, speaking and critical thinking. ठीक है जी। ये अभी हमें जो सबसे पहले वाली चीज़ बता रही है वो रीडिंग का बता रही है। ये रीडिंग स्किल हमें इससे पता चलेगी। ठीक है जी। ये जो बुक की निशान है ना इससे पता चलेगा। ठीक है। लुक एंड रीड, पुट अ राइट मार्क और अ क्रॉस in the box. For example, here you see the uh, photo of who? We see the photo of Little Red Riding Hood. So it is written, this is Little Red Riding Hood. It is correct. So we'll put a right mark here. This is her mother. Yes, she is her mother. So we'll put a right mark here. This is wolf. Yes, this is wolf. We'll put a right mark here. This is her father. No, 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 no. She is not her father. She is her grandma, right? Grandmother. So this is, we'll put a cross here. And this is her grandmother. No, no, no. This is a wolf. So this is wrong. So we'll put a cross here. Okay. Now we go to the ओके जी। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लुक एंड रीड, राइट यस और नो। यहाँ पर हमने वी हैव टू राइट आल्सो एंड वी हैव टू रीड आल्सो। हाँ, सो दिस इज a photograph. Here we see that Little Red Riding Hood lived with her mother and father. Is it correct? Yes, it is correct. We will write yes here. Little Red Riding Hood's mother said, will you take these cakes to the wolf? Oh, no, 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 no. Wolf to nahi tha, it was grandmother. So we'll write here what? We'll write here no. Okay. The grandmother's house was in the forest. No, no, it was on the other side of the forest. So this is a no. We'll write here no because grandmother's house was not in the forest, it was on the other side of the forest. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? No. Work with a friend, talk about the two pictures. How are they different? For example, picture A, here also we see the wolf, here also we see the wolf. Example is, in picture A, the wolf is not wearing glasses. In picture B, and the wolf is wearing grandmother's glasses. So another difference is that here the wolf was in the forest. So we'll write here, in picture A, wolf is in the jungle or on in the forest, right? He is in the forest. And while in picture B, what will we write? In picture B, wolf is in the grandma's house. Okay, so हमें ये एक एक और एग्जाम्पल मिल गई। एंड यू कैन हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स कि here the tongue of wolf is out, here the tongue of wolf is not out, and there can be so many other examples. Okay, now we go to the next page. ओके, नाउ हमारे पास अभी जो है पेज 34 पे, ऑन पेज नंबर 34 वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट इज फाइंड द वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, दिस वर्ड, these what are the words that we have to find? कौन कौन से लफ्ज़ ढूंढने? ईट, नॉक, फॉरेस्ट,
grandmother and axe. ईट तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे पहले करके दिया गया हुआ है. नाउ वी हैव टू सी नॉक. नॉक. नॉक कहाँ पर है? देखें 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 देखें. के से स्टार्ट कहाँ पर होता है? के कहाँ पर है? के कहाँ पर है? ये के है. यहाँ से के एन. यस, के एन ओ सी के. यस, दिस इज नॉक. सो we'll draw a circle here. Right. Next is forest. So the तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट वाला लेटर ढूंढें और फिर उसके साथ सेकंड वाला लेटर और फिर थर्ड वाला. यहाँ पर एफ़ देखें कहाँ पर है. एफ़ एफ़ एफ़. यस, दिस इज़ एफ़. इसके बाद कहाँ पर? इधर ओ. ये ओ है. वो यहाँ पर भी ओ है. आर आर. यस, दिस इज़ FOREST. फॉरेस्ट. दिस इज़ द वर्ड हेयर. सो वी विल ड्रा अ सर्कल हेयर. ये सर्कल भी हमने बना दिया जी. फिर आ गया ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर स्टार्ट किस वर्ड से होता है? विद दी वर्ड जी. सो द वर्ड जी इज हेयर and R, yes, R is here, and yes, okay, this is GRANDMOTHER. So this complete column is this word. So we'll draw a circle around this column. Yes, okay. Then last is X, AXEX. Where is A? Yes, AXE. Yes, this is X. So we'll draw a circle here. Okay, so this page is done. Now we go to the page 35. Look at the pictures and read the questions. Write complete sentences. Who made cakes for grandmother? Little Red Riding Hood's mother made cakes for grandmother. Okay, now next sentence is that we have to make another sentence. हमने एक जुमला इसका जवाब देना है. Who took the cakes to grandmother? Who took? Little Red Riding Hood took the cakes to the grandmother. So we'll write Little Red Riding Hood took the cakes to grandmother. Okay, so this is the reply. Who did the wolf want to eat? यानी wolf किसको खाना चाहता था? Wolf wanted to eat Little Red Riding Hood. Okay, so what will be the answer? Wolf wanted to eat Little Red Riding Hood. Okay, so हमारा page 35 is done. Now we go to the next page. Look at the pictures. Talk to your teacher about Little Red Riding Hood's morning. What's she doing? What's she doing? What's she doing? And what is she doing? For example, Little Red Riding Hood was in the garden. Here, Little Red Riding Hood is going through the jungle. Here, the Little Red Riding Hood's mother is giving her the cakes, and here she is knocking the door. So, she is in the garden. Her mother is giving her the cakes, and she is going from the forest, and she is knocking the door. So we have to write all these 4 sentences. Okay. Now the next is read the text, choose the right words and write them on the lines. From these lines we have to select from over here. For example, in 1 we had to select from has, had and have. Oh grandmother, you have got very big ears, said Little Red Riding Hood. सो फ्रॉम दिस रो वी हैड टू फाइंड, हमने चूज़ करना था, तो यहाँ पर राइट वर्ड था हैव. अब यहाँ पर नेक्स्ट है आई डैश हियर यू वेरी वेल विद देम माई डियर सेड ग्रैंड मदर.
तो यहाँ पर क्या है, कैन आई कैन I can hear you very well with them, my dear, said grandmother. Little Red Riding Hood was very frightened when she saw the grandmother's big teeth. So over here, what will we write? We'll write when. Okay. Okay. Here in this page, we see that and we हमें कहा गया है कि look at the pictures, one picture is different, how is it different? हमने यहाँ पर एक जो है ना रिसर्च करनी है। ये देखिए, this is the picture of wolf in the jungle, here he is in the bed, here also he is in the bed, and here is also. Picture A is different because the wolf is not wearing grandmother's clothes. Here he is putting on the clothes of grandmother, here also and here also. But here he is in the forest and he is not putting on the clothes of grandmother. So ये different हो गई। अब यहाँ पर देखें 1A में ये जो है ना, she is carrying a basket. B में she is running but she doesn't have a basket. Here she is carrying the basket and here also she is carrying the basket. तो different कैसे होगा? ये B is different because he is not carrying the basket in this picture B. Picture B is different because she is not having the basket in her hands. ओके, ये हमें अभी क्लियर हो गया कि ये किस तरह डिफरेंट था। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं उस पर कि जी लुक एंड रीड। पेज नंबर जो है ना हमारा 39 है। राइट द आंसर्स। वाई डिड द वुल्फ वियर ग्रैंड मदर्स क्लोथ्स, ईट लिटिल रेड राइडिंग हुड। इन ये हमें हिंट्स भी मिले हुए। तो इसका आंसर हम यहाँ पर मिसाल दी हुई हमें, जिसी पैटर्न पे हमने आगे भी देनी है। बिकॉज he wanted to eat Little Red Riding Hood. अब next is what did the wolf do to grandmother? इसकी भी हमें है hide or under the bed. तो what happened was he hid her under the bed. ठीक है जी, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम। Why did Little Red Riding Hood say help help, be frightened? हम will say because she was frightened। ठीक है जी, बी का पास्ट टेंस होता है was, so we'll write because she was frightened। ठीक हो गया जी, आपको भी समझ आ गई ना बात ये। ओके जी, अभी हम इस पे चले जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। राइट ऑलवेज और नेवर। लिटिल रेड राइडिंग हुड वियर्स अ ब्लैक कोट। नेवर, शी नेवर पुट्स ऑन द ब्लैक कोट। लिटिल रेड राइडिंग हुड always wears a red coat. The wolf dash talks to Little Red Riding Hood's father. The wolf never talks to the Little Red Riding Hood's father. The wolf is dash hungry. Wolf is always hungry. Little Red Riding Hood dash sees the wolf again. Little Red Riding Hood never sees the wolf again. Ask and answer the questions with a friend. What is Little Red Riding Hood's mother's doing? She is cooking. Okay.
Now the question number 2 is, what is Little Red Riding Hood doing? She is playing. She is playing in the garden. Okay. Is her father playing? Is he playing? No. No, he is cutting wood. Okay. In their house, is their house big or small? Their house is small. So what will we write? We'll write their house is small. Okay. ठीक जी, नेक्स्ट हमारा जो है पेज, उस पे हम देख रहे हैं कि जी, रीड द टेक्स्ट एंड चूज द बेस्ट आंसर. कैन यू टेक दीज केक्स टू ग्रैंड मदर? व्हाट डज शी रिप्लाई? यस ऑफ कोर्स. नो थैंक यू. नो. दिस इज, ये राइट वाला आंसर तो ये था ना, कि क्योंकि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा कि यस ऑफ कोर्स. गुड बाय मदर. और फिर वो क्या कहती है? हेलो? नहीं, वो कहती है सी यू लेटर. सो हम इसको सर्कल करेंगे. आई हैव गॉट सम केक्स फॉर यू. डोंट वरी. थैंक यू माई डियर. किस में, इसमें से कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला. यू हैव गॉट वेरी बिग ईयर्स. तो उसके जवाब में वो क्या कहता है? नाउ आई वॉन्ट टू ईट यू. नहीं, वो कहता है ये वाला, आई कैन हेट यू वेरी वेल. ओके. अब इधर हमने जो जो ब्लैंक प्लेसेस हैं, उनको हमने AIAWEAEE और OO से हमने इनको फिल करना है. जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड, T था और K था यहाँ पर, तो उसमें 2 ब्लैंक स्पेसेस थी. तो यहाँ पर टुक ना, टुक द केक्स टू ग्रैंड मदर्स हाउस, TOOK होना चाहिए था यहाँ पर. द वुल्फ इज डैश लिटिल रेड राइडिंग हुड इन द फॉरेस्ट. वुल्फ, एस के बाद कौन सा आ सकता है? वुल्फ. सॉ, SAW, सॉ लिटिल रेड राइडिंग हुड इन द फॉरेस्ट. नंबर 3 इज कम इन लिटिल रेड राइडिंग हुड. S-D. इसके बीच में क्या आ सकता है? सेड. ये लफ्ज़ बनना चाहिए सेड. सेड में से इसमें मिसिंग क्या है? AI. सो हम इधर लिखेंगे AI. ये हमने यहाँ से AI लिया है ना, हमारे पास आंसर्स इधर मौजूद हैं. कम N-R टू मी माई डियर सेड ग्रैंड मदर. यहाँ पर भी हमारे पास NEA है ना, नियर आना था ना यहाँ पर. सो हम विल राइट EA टू मी माई डियर सेड ग्रैंड मदर. I can dash you very well with these big eyes, said grandmother. I can see you, double E यहाँ पर से जो है हमने यहाँ पर लिख लिया. ओके. ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक बड़ी मज़े की चीज़ है. सर्कल द करेक्ट पिक्चर. हाँ. हु एन्जॉयज़ मेकिंग केक्स. ये ग्रैंड माँ की एक तस्वीर है और एक तस्वीर है जो उसकी मदर की है, लिटिल रेड राइडिंग हुड की. सो ये हमने सर्कल करना है कि हर मदर लाइक्स टू एन्जॉयज़ मेकिंग केक्स. सो हम इसको सर्कल कर देंगे. हु डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस स्टोरी. दिस इज़ वुल्फ एंड दिस इज़ ग्रैंड माँ. देखिए, हर बंदा खिलाफ किसके होता है? ये वुल्फ के. सो हम विल सर्कल दिस. अब आ जाते हैं हम. Who enjoys eating cakes? Who enjoys eating cakes? Grandma or the wolf? Grandma. Okay, so we'll put the circle here. Who works with an axe? Mother or father? Father. So we'll circle this. Okay. Now order the story, write 1 to 5. For example, first what happens is the Little Red Riding Hood's mother made some cakes. Little Red Riding Hood took them to grandmother's house. ठीक है. अब जो है हमने इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आता है कि द वुल्फ saw Little Red Riding Hood. The wolf ran to grandmother's house.
The wolf saw Little Red Riding Hood's father with the axe. The wolf ran and ran, and Little Red Riding Hood knocked the grandmother's door, or the wolf jumped to the. So second कौन सा बनता है? This is second. First, the Little Red Riding Hood's mother made some cakes. Little Red Riding Hood took them to the grandmother's house. Second was the wolf saw Little Red Riding Hood. The wolf ran to grandmother's house. हाँ, ये होता है. Third, what happens is the Little Red Riding Hood knocked on grandmother's door. What is the fourth? The wolf jumped into grandmother's bed. And what is the fifth? The wolf saw Little Red Riding Hood's father with his axe, and the wolf ran and ran. ये हमने जो इनको अरेंज करके रखा है. तो फर्स्ट क्या हुआ था, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो विद दिस वी कम टू दिस कंप्लीशन ऑफ दिस. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया. अगर आप लोगों ने इन्जॉय किया है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमें लाइक करेंगे, और जो दोस्त जिनको और भी ज़रूरत है हमारे लेक्चर्स की, उनको भी आप बताएंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी सवाब हो. आई होप यू लाइक इट. अल्लाह हाफिज़. ओके नेक्स्ट, सॉरी एक रह गया था आपका, तो हम ये दोबारा इस पर करते जाएं. आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स विद द फ्रेंड. एग्जांपल इज, व्हाट इज़ द वुल्फ डूइंग? द वुल्फ इज़ रनिंग फ्रॉम लिटिल रेड राइडिंग हुड्स फादर. अब उसके बाद ये जो है ना, ये तो हमारा आंसर. और उसके अलावा और भी हो सकते हैं कि व्हाट इज़ द फादर डूइंग, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. रीड द क्वेश्चंस and answer. Write where, why and who. Where did the wolf see Little Red Riding Hood? He saw her in the forest. Dash was in the grandmother's bed. The wolf was in her bed. Who was in the grandmother's bed? Wolf was in the. Dash didn't Little Red Riding Hood go near the bed. She was frightened. Why? इधर आएगा. ठीक है. एंड फोर्थ में, डैश डिड लिटिल रेड राइडिंग हुड गो टू ग्रैंड मदर्स हाउस टू गिव ग्रैंड मदर्स सम केक्स. यहाँ पर फिर आएगा क्या? वाई डिड लिटिल रेड राइडिंग हुड गो टू दी. ओके, नाउ इट इज़ कंप्लीट, एंड खुदा हाफिज़ टिल आवर नेक्स्ट वीडियो.